In the name of Allah Almighty, the most merciful and beneficent. Dear all students of first year, Assalamu alaikum. Dear student, as you know that educational institutes have been closed again due to the pandemic of COVID-19, and we are here for virtual class again. Dear students, in today's class we will be reading a remaining portion, a remaining topic of your course, that is Ozymandias. Ozymandias is a poem, and we'll read the poem. Ozymandias is a poem written by one of the fine English poet, that is who is P.B. Shelley. P.B. Shelley means Percy Bysshe Shelley. Let me tell you something about the writer and something about the author, the poet. That is, P.B. Shelley means Percy Bysshe Shelley, who was born on 4th August 1792 and died on 8th July 1822. Dear students, Percy Bysshe Shelley is considered one of the major English romantic poet of his time, one of the most major English poet of his time, and he is considered the fine lyrics. Fine lyrics mean there is musicality in his poetry. He is one of the fine lyrics poet of his age, of his period. So, dear student, he is again considered the philosophical poet of his time. He is also considered as philosophical poet of his time. He is again remembered as revolutionary poet of his time. He is again remembered as revolutionary poet of his time. He was also a verse dramatist. The Cincy is his verse drama. His verse drama composed in poetry, and he also wrote quantity essays on political, social, and philosophical issues. He has his own political view. He has his own social view. He has his own philosophical view. So, dear students, as I told you, that he was considered one of the major English romantic poet of his time. So, romantic, it means that Percy Bysshe Shelley, P.B. Shelley, belongs to romantic era. Romantic era means romanticism. In English poetry, English literature has been divided, into various segments, into various periods, and these various segments of time, according to history, where these segments are called period. So romanticism is a tendency, or romanticism is a period as well. So Percy Bysshe Shelley belongs to romanticism of English poetry. So there is a question comes in your mind, that what is romanticism? Romanticism was an artistic, literary, and musical and intellectual movement originated in Europe towards the end of 18th century. 18th century के end में, 18th century means 1792, 1750, at almost 1770 से इसकी approximately start हुई है, and it was at its peak during 1800 to 1850. It was considered that it was at its peak. So actually it start during from 1770, but the publication of lyrical ballad by Samuel Taylor Coleridge and William Wordsworth gave it strength. So, dear student, romanticism was an artistic, literary, musical, and intellectual movement that originated in Europe towards the end of 18th century. 18th century के end में एक नई सोच आ गई लोगों में, एक मूवमेंट, एक तहरीक चली, और उसमें लोगों ने क्या किया? लोगों ने कहा कि यार फीलिंग्स को ज़्यादा वो अहमियत देनी चाहिए, इंडिविजुअल को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, पोइट्री स्पॉन्टेनियस आके कहलाने लगे, यानी अपने से प्रीवियस जो उनका जो पीरियड जो था, जिसे क्लासिकल पीरियड कहा जाता है, उस पीरियड में क्या होता था? उस पीरियड में दे कंसिडर उनकी लैंग्वेज बहुत टफ लैंग्वेज होती थी, और उनके यहाँ क्या था? एक पोइट्री जो था, एक क्लॉक वाइज सिस्टम था, बहुत ज़्यादा क्लॉक वाइज, उसमें आप रूल रेगुलेशन को आपने फॉलो करना होता था। और जब ये रोमांटिसिज्म आ गया, लोगों ने कहा कि नहीं, आपकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, इट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल टू कॉमन मैन, आम इंसान की समझ होनी चाहिए। आम इंसान यानी विलियम वर्ड्सवर्थ ने डिफाइन किया था पोइट को, एंड ही डिफाइंड पोइट एज a poet is a man talking to man in his own language. So शायर वो बंदा है जो आदमी से बात करे उसकी अपनी जुबान में मतलब
the common man must understand his language. इन्होंने कहा कि लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए. और इनके यहाँ क्या था, नेचर जो था क्लॉकवाइज नहीं था, नेचर वाइल्ड था, वाइल्ड नेचर था इनके यहाँ. उनके यहाँ क्लॉकवाइज नेचर था, इनके यहाँ क्या होता था, वाइल्ड नेचर होता था. और इनके यहाँ क्या था, इमेजिनेशन को अहमियत दी जाती थी और इंडिविजुअल फीलिंग्स को अहमियत दी जाने लगी. तो इस इंटेलेक्चुअल मूवमेंट को और इस म्यूजिकल मूवमेंट को, इस लिटरेरी मूवमेंट को रोमांटिसिज्म कहा जाता है. एंड Percy Bysshe Shelley belongs to that romanticism, that romantic period of English literature. Dear student, let me share with you an information that is, Shelley did not achieve fame in his lifetime. उसको अपनी जिंदगी में कोई लाइफ टाइम में उसको अचीवमेंट नहीं मिली. Shelley did not achieve fame in his lifetime, but recognition of his achievement in poetry developed following his death. यानी उसकी posthumously उसके मरने के बाद, यानी डेथ के बाद, following his death, उसकी पोइट्री की क्या हो गई, अहमियत लोगों को पता चला. His best known works are Ozymandias, as we are reading the poem, that is, he has written this poem in 1818, and then Ode to the West Wind. Ode to the West Wind is again one of his best poems that he has written, in 1819. And then to Skylark, 1820. There are many things, but these are the famous works, by P.B. Shelley. Dear student, his life was marked by family crisis, ill health, and backlash against atheism and political view. Let me tell you that he was an atheist, and also he has his own political views. And due to this atheism and political view and his essay about atheism, he was, his life was marked by family crisis, ill health, backlash against atheism, and his political view. उनकी वजह से उसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा. In 1818 he was an exile permanently, a permanent exile in Italy. इटली में भी उसको exile में रहना पड़ा 1818 में. And he died in boating accident in 1822 at the age of 29. यानी by 29 उम्र से, यानी साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में वो बोटिंग में, यानी कश्ती चलाते हुए वो डूब के मर गया था. Now, dear student, it was all about the author. It was all about the poet. And let me tell you something about the poem Ozymandias. What is the poem is all about? What the poem is? Okay. Ozymandias is a poem, is a sonnet, form of poetry. The form of poetry is, sonnet by Shelley. What is sonnet? Sonnet is a form of poetry, is a form of poem. It has 14 lines. The first 8 lines are called octave and the rest 6 lines are called sestet. यानी एक स्ट्रक्चर पोइम होती है, इसकी एक मखसूस स्कीम होती है, राइमिंग स्कीम होती है, इसमें एक मीटर इस्तेमाल किया जाता है. तो इस किस्म की पोइट्री को जिसमें 14 लाइंस हो, 14 लाइंस हो, जिसे हम सोनेट कहते हैं, तो सोनेट है. Shelley wrote this poem in a healthy competition with his fellow poet Horace Smith, who also wrote a poem with the same title. यानी Shelley wrote this poem in a healthy competition with his fellow poet Horace Smith. होरेस स्मिथ और इन्होंने एक हेल्थी कंपटीशन में एक पोएम लिखा था. दोनों ने इसी टाइटल पे पोएम लिखा है. होरेस स्मिथ ने भी लिखा था और इसने भी लिखा है. Dear students, here in this poem, the poet explored the fate of history. यानी हिस्ट्री की, यानी फेट ऑफ हिस्ट्री के बारे में हमें बता देता है. रेवेज ऑफ टाइम, यानी वक्त की रेवेज जो है, वक्त की क्या मतलब वक्त क्या क्या बुला देता है, वक्त क्या क्या खत्म कर लेता है. यानी रेवेज ऑफ टाइम एंड ट्रांजिटरीनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान की जो ट्रांजिटरीनेस है, ह्यूमन लाइफ की जो ट्रांजिटरीनेस है, उसके बारे में हमें क्या कर देता है, हमें बता देता है. एंड इवन द ग्रेटेस्ट मैन एंड एम्पायर दे फोर्ट आर इम्पर्मानेंट. यानी ये पोइम हमें ये बता देता है कि इवन द ग्रेटेस्ट मैन एंड द एम्पायर दे फोर्ट, यानी जिस तरह की बड़ी सल्तनत भी वो बनाए, जिस तरह की बड़ी सल्तनत भी वो कायम करे, आर इम्पर्मानेंट. दे हैव टू डिके. उन्हें क्या होना होता है, उन्हें डिके होना होता है, खत्म होना होता है. देयर लेगेसीज फेट टू डिके इन ऑब्लिवियन. उनके लेगेसीज भी क्या होते हैं, यानी एक ऐसा वक्त आएगा उनकी लेगेसीज भी क्या होती है, लेगेसीज भी वक्त के साथ साथ क्या होंगे, खत्म होंगे. अगर हम इस पोइम को देखते हैं तो पोइम क्या है, पोइम में एक ऐसा यानी पोइम में एक्चुअली होता इस तरह है कि पोइट जो है एक ऐसे बंदे से मिलता है. वो बंदा क्या होता है, who has been to ancient, who has been to a foreign land, who has been to foreign land, I can say that who has been to a desert, who has been to
In this poem, let me tell you that one thing more that is important to tell you that Ozymandias actually was the name of the throne. Ozymandias was actually the name of the throne of the old Egyptian king Ramesses, यानी Ramesses pharaohs too, जिसे I can इसे फिरौन भी कहा जाता है, लेकिन Ramesses का जो वो है, actually it is the name of the throne of Egyptian king. Ozymandias क्या है? Ozymandias actually a name of the throne of old or ancient Egyptian king. Egyptian king Ramesses. यानी ओल्ड इजिप्शियन किंग रेमेसेस जो है उसके दरबार था, उसके तख्त का नाम क्या था? ओजिमंडियास था. इस पोइम में क्या होता है? द पोएट टॉक्स अबाउट हिज फुलिश डिजायर. द रेमेसेस की फुलिश डिजायर के बारे में हमें बता देता है. द पोएट टॉक्स अबाउट हिज फुलिश डिजायर टू इमोर्टलाइज हिमसेल्फ बाय एरेक्टिंग स्टैचू. यानी यहाँ पे रेमेसेस क्या करता है? अपना एक स्टैचू बना के, अपना एक मुजस्सिमा बना के अपने आप को इमोर्टलाइज करना चाहता है. तो यहाँ पे शायर हमें क्या बताता है? टॉक्स अबाउट द फुलिश the foolish attitude or the foolish desire of the king to immortalize himself by erecting a statue. In the poem, the poet meets a person who has been to ancient place in the desert. To ancient place in the desert. He tells the poet about the ruined statue of great and powerful King Ozymandias. It had been destroyed with the passage of time. And also he tells the poet that about the ruined statue of the great and powerful Ozymandias. It has been destroyed with the passage of time. There were only two legs which stood on a platform, and the upper part of the body was nowhere to be seen. यानी वो जो बंदा है वो शायर को ये बता देता है कि वो एक इजिप्शियन यानी डिजर्ट को, एंशिएंट डिजर्ट को, यानी वो सहरा में उसने क्या किया है, वक्त गुजार किया है, और शायर को बता देता है. तो शायर को ये बता देता है कि उसने क्या देखा? उसने एक ऐसा बड़ा मुजस्सिमा देखा जिसमें दो उसने टांगे देखी. उसका अपर पार्ट नहीं था, टूटा हुआ था, और उसका यानी चेहरे का वो टुकड़ा क्या था? कहता है कि and nowhere to be seen, the face of the statue lay buried in the sand, and he praises the talent of the artist as the minus per expression and wrinkle had been perfectly copied by him. यानी यहाँ पे वो बंदा जो है, वो जो ट्रेवलर जो है, वो शायर को ये बता देता है कि आर्टिस्ट की कमालात के बारे में बता देता है. इट मीन्स दैट आर्ट इज इमॉर्टल, ह्यूमन बीइंग इज मॉर्टल, ह्यूमन बीइंग ट्रांसडेरियस लाइफ है, आर्ट इज इमॉर्टल. यानी यहाँ पे शायर की यानी आर्टिस्ट के उसको यानी काम की प्रेस करता है, उसकी तारीफ करके कहता है कि इवन द माइनस डिटेल, इवन द माइनस एक्सप्रेशन ऑफ हिज फेस एंड रिंकल हैड बीन कॉपीड बाय हिम. यानी उसके चेहरे की हर एक लाइन को उसने कॉपी किया था उसके फेस के विजेज में. तो dear student, it was all about the poem and the poet. Let me read the poem for you. It is a very simple poem, and let me read the poem and explain the thing to you. I met a traveler from an antique land. In the first line of the poem, the poet says, I met a traveler from an antique land. I met a person who had been to ancient place in the desert, who had been to antique land. एक शायर एक मुसाफिर से मिला जो क्या था? एंटीक लैंड से होकर आया था. Who said, उसने बताया, to was trunkless leg. Trunkless leg mean, trunkless किसे कहा जाता है? Trunkless mean without upper part. जिसकी अपर पार्ट ना हो, आगे वाला हिस्सा ना हो, ट्रंकलेस से कहा जाता है. ट्रंकलेस लेस ऑफ स्टोन स्टेन्ड इन द डिजर्ट. वो शायर को ये बता देता है वो बंदा कि उसने क्या देखा? एक ऐसा वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग देखा, यानी टांगे देखे, ऑफ स्टोन, पत्थर के बने हुए थे. स्टोन इन द डिजर्ट, सैंड इन द डिजर्ट, स्टोन सैंड इन द डिजर्ट. यानी क्या था? सहरा में उसने देखा. नियर देम ऑन द सैंड, उनके करीब, यानी सहरा में पड़ी थी. हाफ संक एंड शैटर्ड विजेज लाइज. कहता है कि उसकी चेहरा जो था, उसका जो फेस जो था, वो हाफ संक था, यानी डूबा हुआ था. संक मीन डिसेंट, संक मीन से कहते हैं, संक मीन डूबा हुआ था. वो यानी उसमें क्या हुआ था? डूबा हुआ था, यानी रेत में डूबा हुआ था. शैटर्ड विजेज, शैटर मीन ब्रोकन. शैटर्ड किसे कहा जाता है? शैटर मीन ब्रोकन. विजेज फेस को कहा जाता है.
उसका चेहरा टूटा हुआ था, बिखरा हुआ चेहरा था उसका। Whose frown, यानी उसकी लाइन्स, एक्सप्रेशन ऑफ एंगर को फ्रॉन कहा जाता है। एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, फ्रॉन मीन एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। एक्सप्रेशन ऑफ एंगर को फ्रॉन कहा जाता है। Whose frown and wrinkled lips, wrinkled lips mean marked of line, marked line। wrinkle किसे कहा जाता है? लाइंस को कहा जाता है। wrinkle, wrinkle mean लाइन को कहा जाता है। wrinkles mean lines, ठीक है। wrinkles mean lines। Wrinkles and sneer of cold command, sneer mean facial expression of hatred, sneer of cold command, cold command mean cold, without feeling, they can without feeling, control without, the command, sneer of cold command mean the control without feeling, control without feeling। यानी वो शायर, वो बंदा उसे, यानी ट्रेवलर क्या करता है, शायर को बता देता है कि उसने सहरा में एक ऐसा वो देखा, he saw, who said the two vast and trunkless lake of stone stained in the desert, near them on the sand, half sunk a shattered visage, whose frown and wrinkled lips and sneer of cold command। यानी यहाँ पे कहता है कि एक मैंने मुजस्सिमा देखा जिसका अपर पार्ट में ही था और उसका चेहरा जो था वो बिखरा हुआ था, और उसके बिखरे चेहरे पे क्या थे, उसके बिखरे चेहरे पे गुस्से के एक्सप्रेशन थे, और क्या थे, रिंकल्स थे, उसकी में लाइंस लगे थे उसके चेहरे पे। एंड सीनियर ऑफ कोल्ड कमांड, और कोल्ड कंट्रोल का क्या था उसमें, विदाउट फीलिंग कंट्रोल जो था उसमें, यानी ऐसा कंट्रोल था जो बहुत ज्यादा पावरफुल उसकी वो करता है कि ऐसा कंट्रोल था। tell that it is sculptor well those expression read, ये बता देता था अगर उसके चेहरे को, यानी माइन्यूट डिटेल हमें बताने के बाद, फ्रोन को बताने के बाद, रिंकल्स हमें बताने के बाद, सीनियर ऑफ कोल्ड कमांड हमें बताने के बाद, शायर को ये बता देता है कि जो स्कल्प्टर था, स्कल्प्टर मीन द पर्सन हु इंग्रेव, यानी स्कल्प्टर किसे कहा जाता है, स्कल्प्टर मीन द पर्सन, द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट को कहा जाता है, आर्टिस्ट हु engrave statue, जो मुजस्सिमा बनाता है उसको स्कल्प्टर कहा जाता है, मुजस्सिमा साज। कहता है कि tells that it is sculptor well those expression read, ऐसा लगता था कि स्कल्प्टर ने क्या किया था, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को अच्छी तरह उसने रेट किया था, अच्छी तरह पढ़ा हुआ था, अच्छी तरह बादशाह को उसने देखा था। which yet survive, which yet continue to exist, उसके जो, यानी आर्टिस्ट का जो एक्सप्रेशन को जो रीड करने का वो था, which still क्या है, continue to survive, survive mean continue to exist, survive से कहा जाता है continue to exist, जो अभी भी survive, continue to exist, जो अभी भी क्या कर रहे हैं, exist कर रहे हैं, जो अभी भी क्या है वो नजर आ रहे हैं। stamped on these lifeless things, stamped mean printed on these lifeless things, stamped से कहा जाता है, stamped mean printed on these lifeless things, यानी उस पे जो उसका चेहरा बनाया हुआ था इससे, यानी पत्थर पे, स्टोन पे, कहता है कि वो आज भी क्या हो रहे हैं, वो आज भी वहां पे है। The hand that mocked them, यानी वो हाथ जिन्होंने इसको कॉपी किया था, mock मीन कॉपी करना, and the heart that fed, और यानी the hand that mocked them, और जो हाथ जिन्होंने कॉपी किया था, and the heart that fed, और वो दिल जिन्होंने क्या किया था, वो दिल जिन्होंने ये इन एक्सप्रेशन को उसके चेहरे पे लाया था, जो तासुरात उनके चेहरे पे ये दिल ने लाया था, उन सबको उसने क्या किया था, एक बंदे ने कॉपी किया था। इस आर्टिस्ट का कमाल है कि उसने क्या किया था, he tells us everything, he praises the talent of artists as the minest expression and wrinkles had been copied by him। उसने क्या किया था, उसके wrinkles को भी कॉपी किया था, माइनस डिटेल भी हमें दे देता है, एक्सप्रेशन हमें दे देता है। And the next sixth line stated, the poet says, and on the pedestal these words appear, pedestal mean base of the statue, pedestal से कहा जाता है, pedestal mean base of the statue, base of the statue, यानी उस मुजस्सिमे का जो बेस था, मुजस्सिमे का जो एंड वाला बेस, जो पार्ट जो था जिस पे मुजस्सिमा बना हुआ था, कहता है कि ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, ये अल्फाज लिखे गए थे। ये अल्फाज क्या अल्फाज लिखे गए थे, माय नेम इज ओज़िमंडियास किंग ऑफ किंग, आई एम ओज़िमंडियास एंड आई एम द किंग ऑफ किंग, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, मैं सबसे सुप्रीम बादशाह हूँ, आई एम द पावरफुल मैन, आई एम द सुप्रीम वन, आई एम द ग्रेटेस्ट वन, my name is Ozymandias, king of king, I am the king of king, look on my works, ye mighty and despair। दूसरे बादशाहों से कहता है कि look on my works, मेरे काम को देखो, ye mighty, if you are powerful,
you will despair, आप मायूस होंगे, without hope, यानी क्या होंगे, आप मेरे काम को देखेंगे तो खुद को आप छोटा समझेंगे, आप मायूस होंगे, आप क्या करेंगे, you will feel despair, आप without hope, कहते हैं कि आप क्या करेंगे, मायूस होंगे, डिस्पेयर होंगे, नथिंग beside remains, कुछ भी बाकी नहीं रहता, कुछ भी बाकी, नथिंग beside remains, कुछ भी बाकी नहीं रहता, round the decay, broken pieces, everywhere there is broken pieces, कुछ भी बाकी नहीं रहता. As I told you that even the greatest man and the empire they fought are impermanent, यानी बड़े से बड़ा आदमी जो बड़ी से बड़ी सल्तनत भी बनाए वो क्या होगा, they are impermanent, their legacies fade to decay into oblivion, उनके legacies भी उनके साथ क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे. इकबाल ने कहा था ना, न गोरे सिकंदर न कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे. तो क्या है न गोरे सिकंदर, यानी गोरे सिकंदर का हमें पता चलता है, न दारा इतना बड़ा बादशाह गुजरा है वक्त का, न उसके कब्र का हमें पता चलता है. वो सारे क्या हो गए, they decayed into oblivion, वो सारे खत्म हो गए, फिनिश्ड हो गए, यानी पीपल, लोगों ने उन्हें भुला दिए, पीपल हैव forgotten them, सबको उन्हें भुला दिए. तो इकबाल कहते हैं न गोरे सिकंदर न कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, कितने बड़े बड़े लोगों के क्या हो गए, निशान मिट गए, उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहता. इसमें कहते हैं कि nothing beside remain, कुछ भी बाकी नहीं रहता, round the decay, everywhere there is broken pieces, there broken pieces. वो कहता है कि एक शायर का वो कहना है, तुम्हें भी वक्त आखिर मिटा देगा, तुमसे बेहतर निवाले हो गए. As I told you that, the poem is all about the ravage of time. The poem is all about the ravage of time. वक्त की रवेज जो है, वक्त की तलखियाँ ऐसी है जो सब कुछ बुला देते हैं, जो सबको निवाला बना देती है. तुम्हें भी वक्त आखिर मिटा देगा, तुमसे बेहतर निवाले हो गए. यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में आए, बड़े बड़े नाम आए, बड़े बड़े लोग आए. Where there is no one, और सारे क्या हो गए, खत्म हो गए. Nothing beside remains, कुछ भी नहीं रहता. Round the decay, यानी सारे broken pieces है. Of the colossal wrecks, they are, there is ruin, there is nothing else but ruins. क्या है, wreck means ruins, तबाहशुदा, ruins, खंडरात रहते हैं और कुछ भी नहीं रहता. Boundless and bare, ये ruins क्या है, they are boundless, without limit and bare, they are without great, without the great statue of the king. Bare mean without the great statue of the king. अब king की statue तो क्या थी, वहां पे पड़ी हुई थी, वो थी trunkless थी, आगे बिखरा हुआ था, फेस उधर पड़ा हुआ था, अपर पार्ट नहीं था. तो कहता है कि the lone and the level sand stretch away far away. उसमें क्या, this statue of the king was the lone survivor. This statue of the king was the only survivor in that sand, stretched far away. इस फैले हुए इस वसी डेजर्ट में सिर्फ रहने वाला कौन था, वो स्टेचू पड़ा था. अब न कहीं बादशाह नजर आता था, न कोई उनकी लेगेसीज नजर आ रही थी, उसका चेहरा कहीं और पड़ा हुआ था, टांगे कहीं और थी, ट्रंक, upper part of the body was somewhere else. There was nothing. Yani the poem tells us that, in this poem the poet tells us that nothing is permanent in this world. Nothing is permanent. Everyone has to die. The poet explored the fate of the history. Tells us the historical. Ozymandias was the historical man. He was the most powerful man of history. So he says the fate of the ravage of time and transitoriness of human being. So human being is transitory. The nature of human being is transitoriness, and ravage of time is the most permanent thing in the world. Ravage of time, permanent thing. So ravage of time will destroy everything. So in the case of Ozymandias, the poet says that he also died. He also have been forgotten by the people. So only permanent thing is the ravage of time. वक्त की जो ravage जो है ये क्या है, nothing is hidden from the ravage of time. वक्त यानी हर एक चीज को क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है, तो तबाह कर देता है. तो इतना अगर इस पोइम को हम पढ़ते हैं, the poem is all about the ravage of time, the poem is all about the fate of the history, the poem is all about the transitoriness of human being, and the poet says that even the greatest man and the empire they forged are impermanent. जो बड़ी से बड़ी सल्तनत भी बनाए, जो बड़ी से बड़ा सा बड़ा आदमी जो है, they are impermanent, their legacies fade to decay into oblivion. उनके legacies भी क्या होंगे, वक्त के साथ साथ उनकी legacies भी खत्म होंगे, उनके जो सारे जितने काम भी थे खत्म होंगे. So the poem is this poem is a very simple poem by Percy by Shelley. It is a sonnet, as I told you that sonnet has 14 lines. 14 lines. The first 8 lines are called octave, and the remaining 6 lines are called sestet. So in this poem, in a very simple poem, in this short poem, the poet tells us that the poet tells us the story of Egyptian Ramesses. Egyptian Ramesses. यानी किंग की कहानी हमें बता देता है और उसकी कैरेक्टर के बारे में हमें बताते हुए कहता है कि
वो बहुत बड़ा बादशाह था. I met traveler, एक ऐसे ट्रेवलर से मैं मिला, who had been to ancient desert, who had been ancient Egypt. वो पुराने इजिप्ट गया था, वो बादशाह से शायद मिला होगा. तो कहता है वो बंदा उससे मिला था, उसने मुझे बताया क्या था, उसने मुझे बताया कि सहरा में क्या था, एक बड़ा सा ट्रंकलेस वो क्या था, जो टांगे पड़ी हुई थी, उसका चेहरा कहीं और पड़ा हुआ था. यानी उसके पेडेस्टल में ये लिखा था कि माय नेम इज ओजिमेंडियास, आई एम द किंग ऑफ किंग. ठीक है, मेरा नाम ओजिमेंडियास है, मैं किंग बादशाहों का बादशाह हूँ. So it was all about the revenge of time, it was all about the fate of history, and it was all about the transitoriness of human being. Hope you understand the poem. The poem is very simple, and if you do not understand, let me tell you, I'll revise the lecture to you people. Thank you so much.